draw the line for the mean position. We will do it uh, gradually so that we are a little bit familiar with the idea of reduced mass. And also these questions may be also required here and there. You may require these questions also because these are very much concept building problems. Suppose that M1 is M1 is displaced, M2 is displaced, the spring will be elongated. Suppose that at some instant M1 is displaced from its mean position through a distance x1, and at the same instant M2 is displaced from the mean position through a small distance x2. I repeat, M1 को इधर खींच के ले गए, रिलीज कर दिए. जब ये लौट रहा है उस समय किसी इंस्टेंट का डायग्राम है. सेम विथ M2. Is it that M1 is experiencing a force in this direction? Yes, sir. Call this as F1, and the force that M2 is experiencing, we call this as F2. Suppose the acceleration of M1 is A1 and the acceleration of M2 is A2. Now write the equation of motion for this M1. Equation of motion means the very simple aspect. Force is equals to mass into acceleration. Now, can you tell me what will be the value of this force F1? Is F1 the restoring force exerted by the spring? Yes, sir. So will F1 be equal to minus of kx1? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ऐसा हड़बड़ी में नहीं बोलना है, सोच के बताना है. Restoring force will depend on x1, or it will depend upon the extension of the spring. Suppose the natural length of this spring is L. Now, if you think about it here, what amount of elongation is there? Isn't it that the elongation is x1 plus x2? Yes, sir. Spring force depends on the elongation, not on the displacement of individual block. It depends on elongation. Let me, for the time being, write this elongation as x, total elongation. Initially, the spring was of length L. Now the spring is of length L plus x. So elongation is x. So this is minus of kx is equals to
m1, acceleration is d2x by dt square. This will be x or x1. एक्सेलरेशन इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा, जिसका एक्सेलरेशन उसका डिस्प्लेसमेंट. एग्री? Yes, sir. Similarly, for the other block, you will write the equation. Force is mass into acceleration. What will be the value of F2? So minus kx. Yes. So basically, you can observe that the restoring force is same because the same spring is exerting it. The only thing is that the directions are different. Otherwise, the restoring force is same. But okay, let us write F1, F2 just to understand that for which block I am writing. So you have this M2 into d2 x2 by dt square. Suppose if I add both the equations, what will be the left hand side? Minus 2kx. Minus of 2kx. Okay, just we check the right hand side first. It is like m1 plus m2. No, we cannot take anything common here. M1 is also not common. Okay, let us do one more thing. Let me write one more step. This is minus k by m1 into x is equals to d2x1 by dt square. Minus of k by m2 into x is d2x2 by dt square. Now we add them. You have minus kx as common, 1 by m1 plus 1 by m2 is equals to d2 by dt square x1 plus x2. I hope equation is correct. You are following. फॉलो हो रहा है सब लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. What will be x1 plus x2? X. X. The elongation x, because this length is already L. So L plus x1 plus x2 को ही हमने L plus x बोला है. So yes, I can write here d2 by dt square x minus of ax. Okay, what will be the unit of this quantity? For Unit of mass. unit of no, inverse of mass. So let me write this 1 by m1 plus 1 by m2 as 1 by m1 plus 1 by m2 as
1 by mu, where mu has the dimension of mass. 1 by mu is reciprocal of mass, but mu has the dimension of mass. K by mu into x is equals to d2x by dt square. Now you have to tell me something. Check this equation we have. This is for which mass? M1. M1, M. Correct. This is for M2. M2. Now, if you look this last equation, is it that this is the combined equation for M1 and M2? Yes, sir. Yes, दोनों को ऐड कर दिए हैं, वेरी करेक्ट. लास्ट ऑब्जर्वेशन, छोटा सा ही डिस्कशन है. लास्ट ऑब्जर्वेशन, कैन यू फाइंड एनी सिमिलैरिटी between these two equations? Any similarity between these two equations and this one? Are they of the same format? Yes, sir. So this is for M1, this is for M2, this is for entire system. Correct. This is for the entire system. Now, fortunately, this equation has a similar format to this one. So, can I say that, or can I imagine that? Can I imagine or can I say that this equation, the last one that we have written here, is the equation for a spring mass system whose spring constant is k and its mass is mu. And if this object is displaced from the mean position and released, if this object is displaced from the mean position and released, and suppose at some time its elongation is x, the restoring force is acting on this side. Is it that the equation of motion for this system will be this? Yes, sir. होगा. So, can I say that we can replace a two-body system by a single body system having the same spring constant, but the mass of the entire system being replaced by mu? बस यही मेन जगह है. ये समझा कि नहीं, सो बताओ. Yes, sir. So the two body is replaced by a single body. Now tell me, do I know the time period of this system? Yes, I know. Yes, sir. 2 pi under root mu Mu by by K. K. K by Mu by K. Mu by K. and because I know the value of mu, 1 by mu is 1 by m1 plus 1 by m2, means mu is m1 into m2 by m1 plus m2. So I know the time period of this combined system as m1 into m2
divided by k into m1 plus m2. So I have obtained the time period of of this system using the concept of this reduced mass. अभी तक reduced mass वर्ड को क्लियर नहीं किए हैं, उसको बोल देते हैं, फिर इस पर आते हैं. सी, ये तो एकदम से याद ही रखना, रिड्यूस्ड मास के लिए फॉर्मूला 1/μ इज इक्वल्स टू 1/m1 plus 1/m2, where mu is called or known as the reduced mass. Suppose you have mu is equals to m1 m2 by m1 plus m2. क्या समझाना चाह रहे हैं देखो, ये जो प्रॉब्लम हमने अभी लिया था, इस प्रॉब्लम में मान लो कि दोनों ब्लॉक का मास सेम होता, तो सिस्टम का मास कितना है? 2m. लेकिन जब दोनों को हटाकर हम एक सिंगल बॉडी रखेंगे जिससे कि ये सिस्टम इसका इक्विवेलेंट हो जाए, तो इस सिंगल सिस्टम का मास म्यू होगा और उस म्यू का वैल्यू होगा m इंटू m स्क्वायर बाई m प्लस m is 2m. दैट मीन्स इट इज m/2. मतलब दोनों को हटाकर जब हम सिंगल बॉडी से रिप्लेस करेंगे तो इस सिंगल बॉडी का मास इस पूरे सिस्टम के मास का 1/4 है. इसीलिए वर्ड रिड्यूस्ड मास. थोड़ा क्लियर हुआ कैसे रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला निकालते हैं और क्यों रिड्यूस्ड मास बोल रहे हैं? इतना बात क्लियर हुआ. Yes, sir. और ये कंसेप्ट नहीं सीखोगे तो इस टाइप के सिस्टम को एनालाइज कर ही नहीं पाएंगे अगर ये आइडिया नहीं सीखिएगा. Otherwise, it will be very difficult to get the frequency of oscillation, difficult to get the time period. But once you have this idea, it is much easier to calculate. Now, to add on to this, do remember the formula. इसको याद रखना. Now, to add on to this, suppose consider a nucleus, maybe something hypothetical. Consider a nucleus which consists of 2 proton and 2 neutron. एक न्यूक्लियस है जो बना है 2 प्रोटॉन से और 2 न्यूट्रॉन से. थोड़ा देर के लिए ऐसा मान लो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का ही मास सेम ले रहे हैं. और कितना ले रहे हैं? तो m, मास ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज मास ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों को ले रहे हैं m. तो अभी मान लो कि ये सारा न्यूक्लियॉन्स, ये पढ़ भी लिए होंगे, अभी न्यूक्लियर भी है, तो ये सारा न्यूक्लियॉन्स सपोज करिए कि एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर. दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर, नॉट इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर. What is the total mass of the constituents? Is it 4m? Yes, sir. Yes, sir. Now the nucleons combine to form some nucleus. And suppose the mass of this entire nucleus is capital M. So capital M will be
equal to 4m, it will be less than 4m or greater than 4m. So less So than less 4m. than 4m. Less than 4m. Why so? So because in the nucleus they will be interacting. Pardon? In the nucleus there will be So the last the point By was not nucleus they will audible. be Yeah. bound by the nuclear forces, the proton and the neutrons. Hmm. Repeat once again. Our words overlapped actually. Yes, you repeat. So inside the nucleus, there will be the nuclear forces acting upon the protons and the neutrons. So because of the interactions, we will consider a reduced mass for all of the particles. Okay. True. The mass of the nucleus will be less than 4m. Now, what amount of mass is reduced? It is basically 4m minus m. This is the mass that has reduced, which we usually refer to as del m, and we call it mass defect. Now, the question is very easy. As I mentioned one very important word last day, मास कम हो गया तो कहाँ चला गया? तो जितना मास कम हुआ वो मास कन्वर्ट हो गया इनटू एनर्जी. Do remember that mass is also a form of energy. तो मास में जितना रिडक्शन हुआ वो पूरा का पूरा मास कन्वर्ट हो गया इनटू एनर्जी, वेल नोन एज द बाइंडिंग एनर्जी, टू कीप द न्यूक्लियॉन्स इंटैक्ट. उनके बीच में रिपल्सन है, उस रिपल्सन को ओवरकम करके एक लिमिटेड रीजियन के अंदर उसको कंस्ट्रेंड रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को देने में मास कम हो गया. तो फिर से देखोगे कि इस कंबाइंड न्यूक्लियस का मास कंस्टिट्यूएंट के मास से कम है, रिड्यूस्ड मास. तो मास में जो रिडक्शन होता है दैट पोर्शन ऑफ द मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी टू क्रिएट द सिस्टम और टू कीप द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम इंटैक्ट. ठीक है, थोड़ा थोड़ा आइडिया समझ में आ रहा है? yes, sir. Now, if we come to hydrogen atom, as we were discussing in the last class, as we were discussing in the last class, uh, suppose that this is the nucleus. Somewhere we have the nucleus. This is the electron. In a real atom, in a real atom, where you have the nucleus, is it that this nucleus is at rest? No, sir. No. In a real atom, the nucleus is not at rest. The suppose this is proton, electron having mass small m, and this is nucleus having mass capital M. The nucleus
itself is revolving around a certain point. The electron is also revolving, very much similar to a डबल स्टार सिस्टम. बहुत फेमस चीज है, देखिएगा. जब दो स्टार होता है तो दोनों ऐसे पर एक फोर्स लगाता है कि ई भी रिवॉल्व करता है और ई भी रिवॉल्व करता है. द इंटरैक्शन इज सच दैट so is the interaction in the nucleus also. It is not that the nucleus is only exerting force on the electron. The electron is also exerting force on the nucleus, and as a result they both are moving. Now the problem is that I want to solve this problem. I want to find the wave function and I want to find the energy eigenvalues of this system. Now, this nucleus is in motion. The electron is also in motion. So basically, you have two particles and both of them are moving. The problem is I don't know how to write the Schrodinger equation for two particles and each of them in motion. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. So, as I mentioned a little bit in the last class, what we will do is we will reduce this problem into a single particle system by the concept of reduced mass. रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट लगाकर टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस किया जाएगा. तो चलो आंसर को शुरू करते हैं. एक्चुअली ये टू बॉडी प्रॉब्लम का रिडक्शन इनटू अ सिंगल बॉडी प्रॉब्लम ये बहुत इजी सा टॉपिक है और क्लासिकल मैकेनिक्स में इसको एकदम बिगिनिंग में ही पढ़ाया जाता है. बट द ओनली प्रॉब्लम इज दैट कि अभी सिलेबस का स्ट्रक्चरिंग ऐसा है कि अभी तक आपने क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ा ही नहीं है. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग अभी फेस कर रहे हैं. तो क्लासिकल मैकेनिक्स बेसिकली हमने आपको पहले भी कई बार ये बात बोला है कि हमारे सीबीसीएस सिलेबस में पहले क्लासिकल पढ़ाते थे, देन क्वांटम, देन स्टैटिस्टिकल. बट स्टिल यू हैव टू कोप अप विद दिस वट एवर यू हैव बीन ऑफर्ड विथ. This is a bit lengthy answer. You have to keep your focus throughout. Then only you will understand. So let us start with the common things. The hydrogen atom is the simplest bound system that occurs in nature. The system consists of a positively charged nucleus and a negatively charged electron moving under the influence of Coulomb force and bound together by that attraction. Next, here we will solve the problem of hydrogen atom quantum mechanically by employing Schrodinger equation. There is much more to the Schrodinger theory of the one electron atom than its prediction of eigenvalues because it also predicts the eigenfunctions. Let us repeat the sentence. There is much more to the Schrodinger theory of the one electron atom than its prediction of eigenvalues because it also predicts the eigenfunction. तो बोला जा रहा है कि जब हम
हाइड्रोजन एटम पे श्रोडिंगर इक्वेशन लगाएंगे, it is not that we will only get the eigenvalues, we will also get the eigenfunction. And eigenfunctions are very important because, as you know, many a times we have discussed that eigenfunction contains all relevant information about the system. Using the eigenfunction, we can determine the following properties of the atom. Once you know the eigenfunction, you can determine multiple aspects. Few of them are mentioned here. The probability density function, which gives the detailed picture of the structure of the atom that do not violate the uncertainty principle as do the precise orbit of Bohr model. See, very important. All these points are very important. सब का सब एकदम फिजिक्स वाला बात पहले ही 3-4 ठो लिख दिया गया है कि वेव फंक्शन जो है उससे हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालेंगे. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालेंगे माने न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, कैसा है, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांस ज्यादा है, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांस कम है, ये सब चीज पता चलेगा. और वो भी ये एक ऐसा आउटपुट होगा जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करेगा. इसके पहले, इस थ्योरी के पहले जो एटम का डिस्क्रिप्शन था दैट वाज गिवन बाय बोर. तो बोर्स थ्योरी आज भी बहुत रिलेवेंट है, बहुत ही रिलेवेंट है बोर्स थ्योरी आज भी. स्टिल बोर्स थ्योरी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वायोलेट करता है. बोर्स थ्योरी डजंट अकम्पनी विद द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. आई होप आपको वो वाला बात याद है बोर्स थ्योरी का, जिसमें बोर ने ये बोला था दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, electron revolve around the nucleus in some orbits whose radius is fixed. तो फिक्स्ड रेडियस के ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन डिटरमाइन करना पॉसिबल है. तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इंस्टेंटली वायोलेट हो जाता है. तो क्या बोला जा रहा है कि वंस वी अप्लाई श्रोडिंगर इक्वेशन टू हाइड्रोजन एटम, once we apply Schrodinger equation to hydrogen atom, we will be able to determine the structure of the atom. आपको याद होगा एकदम बिगिनिंग से जितना भी अटेम्प्ट है, लाइक दैट थॉमसन्स पल्प मॉडल, प्लम पल्प मॉडल, देन यू हैव रदरफोर्ड्स थियरी, देन यू हैव बोर्स थ्योरी, ये सभी का सभी एटम के डिस्क्रिप्शन को ही देने का कोशिश करता है कि कहाँ पर टोटल मास है, कहाँ पर वैकेंट है. उसी प्रोसेस में हाइड्रोजन एटम सॉल्व्ड बाय श्रोडिंगर इक्वेशन वही अटेम्प्ट ले रहा है, सेम चीज ट्राई किया जा रहा है. लेकिन इस बार थोड़ा सा और एडवांस क्या हो जा रहा है, तो हम लोग ऐसा एक थियरी डेवलप कर रहे हैं जो कंप्लाई करता है विद द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. यस, फिर से रिप्लाई करिए, समझ पा रहे हैं अभी तक? Yes, sir. Yes, sir. Second is the angular momenta of the atom which were incorrectly predicted by Bohr model. तो एंगुलर मोमेंटम का ही पोस्टुलेट था बोर का, ध्यान देना. लेकिन हम लोग आपको थोड़ा बात बताए थे कि एज अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi. दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम इज n टाइम्स h कट. फिर हमने आपको एक दिन पूछा था कि अगर ये n टाइम्स h कट है तो E कौन सा फॉर्मूला है? L इंटू एल प्लस 1 h कट. तो बेसिकली बोर्स थ्योरी में इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया था, जबकि ये जो फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं, जिसको हम लोग क्वांटाइजेशन टेक्निक से निकाले थे स्पेस क्वांटाइजेशन पढ़ते समय, दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी टाइप ऑफ ऑर्बिट, वेदर यू हैव अ इलिप्टिकल ऑर्बिट और यू हैव अ सर्कुलर ऑर्बिट, ये दोनों पर लग जाएगा. लेकिन बोर्स थ्योरी में एग्जैक्टली ये मान लिया गया था दैट द ऑर्बिट्स आर सर्कुलर.
ऐसे थोड़ा बहुत सेमी क्लासिकल थ्योरी में भी इस बात को पढ़ा जाता है जब हम लोग बोर्स थ्योरी का थोड़ा मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं, विच इज नोन एज बोर समरफील्ड थ्योरी। ये कहीं पढ़ाई हुआ है क्या, बोर समरफील्ड थ्योरी? इधर डिग्री में हैव यू No, स्टडीड बोर sir. समरफील्ड थ्योरी? यस, एनीवन? मैंने सुने हो कि नहीं सो बताओ, तब हम समझेंगे, उस हिसाब से हम लोग को आगे प्रोसीड होना है। हैव यू हर्ड दिस टॉपिक, बोर समरफील्ड थ्योरी? नो? ओके। Such a theory will be developed uh, where the orbits will have a flexibility that the theory can be applicable to orbits which are elliptical in shape as well as orbits which are circular. The third is the electron spin and other effects of relativity on the atom, which were also incorrectly predicted by Bohr's model. तो बोर्स मॉडल में देखोगे तो इलेक्ट्रॉन स्पिन को कंसीडर ही नहीं किया गया था कि इलेक्ट्रॉन के पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ये तो कंसीडर किया गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन है ये कंसीडर किया ही नहीं गया था बोर्स थ्योरी में। तो यहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉन स्पिन को भी कंसीडर करेंगे। द रेट एट विच एटम मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेशन होगा बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, ये तो बोर्स थ्योरी में बताया गया था, लेकिन रेट ऑफ ट्रांजिशन इसके बारे में नहीं बताया गया था। इस टॉपिक को पढ़ तो रहे हैं, बीच में एक चीज और थोड़ा सा अगर आज मैंने नेक्स्ट क्लास के पहले पढ़ के रखोगे तो अच्छा होगा, दैट इज द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम को जब हम लोग एक्साइट करते हैं तो स्पेक्ट्रल लाइंस जो हाइड्रोजन एटम एमिट करता है, सपोज हम ऐसे ही दिखाने के लिए बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रल लाइन, मान लो कि ऐसा स्पेक्ट्रल लाइन है हाइड्रोजन एटम का, इस तरह का स्पेक्ट्रल लाइन है हाइड्रोजन एटम का। हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रल लाइंस भी हो सकता है कभी पढ़े होगे, तो बामर सीरीज, लाइमन सीरीज ये सब सुने ही है, तो दिस आर बेसिकली द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। नाउ जो स्पेक्ट्रल लाइंस हाइड्रोजन एटम एमिट करता है उसमें क्या मिलता था, हम यहाँ ऐसा ड्रॉ करने भी सके हैं कि कोई स्पेक्ट्रल लाइन वीक है, वीक है माने ब्राइटनेस इसका कम है, कोई स्पेक्ट्रल लाइन ज्यादा ब्राइट है। बोर्स थ्योरी इस बात को नहीं एक्सप्लेन कर पाया था कि क्यों कोई स्पेक्ट्रल लाइन ज्यादा ब्राइट है और काहे कोई स्पेक्ट्रल लाइन कम ब्राइट है, कितना वेवलेंथ का स्पेक्ट्रल लाइन एमिट होगा ये तो बोर्स थ्योरी ने बता दिया था, लेकिन बोर्स थ्योरी ये नहीं बता पाया था कि वाई सम स्पेक्ट्रल लाइंस आर मोर ब्राइट एंड सम आर लेस ब्राइट। So all because of the rate of transition, so that will be also considered here. So what has been at first briefed to you is that what were the limitations of the existing theory. The most correct theory before this, before you study this, the most correct theory is the Bohr's theory. And what were the limitations associated with Bohr's theory? These are mentioned to you. Let us repeat once again. Bohr's theory was not consistent with Heisenberg uncertainty principle. Second thing, the angular momentum that were predicted by Bohr's theory were not exactly correct. While developing Bohr's theory, the electron spin was not considered, and Bohr's theory was also not able to explain that why few spectral lines are more bright and few spectral lines are less bright. Yes, do reply. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir.
Now, to solve the problem of hydrogen atom, we employ the technique of reduced mass. This technique models the atom, means original atom, by another atom in which the nucleus is infinitely massive and the electron has reduced mass mu given by. First, let us see the image and then we will return to it. The first diagram is our original atom. This is our original atom where, as I mentioned, the electron is revolving as well as the nucleus is also revolving. Both are in motion under the influence of the Coulomb force which they are exerting to each other. Now, this exact atom is replaced by another atom which we are calling as the model atom, where we assume the mass of the nucleus to be infinite and the electron revolving around the nucleus with a mass mu not equal to the mass of electron but equal to the reduced mass of the system. एक्चुअल एटम के बदले में एक दूसरा एटम हम इमेजिन कर रहे हैं जिसमें ये मान रहे हैं कि न्यूक्लियस इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट मास होने के कारण उसका एक्सेलरेशन जीरो हो गया। हम उसको एज्यूम कर सकते हैं कि अब वो रेस्ट में है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है उसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, उसका मास म्यू होगा जो कि रिड्यूस्ड मास है, सच दैट कि इस सिस्टम का जो टोटल इंटरैक्शन एनर्जी है और वो इस सिस्टम के टोटल इंटरैक्शन एनर्जी के इक्वल हो जाए। बोलिए, इज इट ओके? Yes, sir. Let us repeat the sentence once again. The last line once again. To solve the problem of hydrogen atom, we employ the technique of reduced mass. This technique models the atom by an atom in which the nucleus is infinitely massive and the electron has mass mu given by वो सेम है m1 into m2 by m1 plus m2, where small m is the mass of electron and capital M is the mass of nucleus. The reduced mass electron moves about an infinitely massive nucleus with the same electron nucleus separation as in the actual atom. Since the infinitely massive nucleus must be completely stationary, mass infinite, acceleration zero, it is necessary to treat only the motion of the reduced mass electron in the model atom, and the problem is thus simplified from one involving a pair of particles to one involving a single moving particle. Okay? इसमें ये भी बात याद रखना कि reduced mass, which is 1 by mu, is 1 by mass of nucleus plus 1 by mass of electron. Is it that the mass of nucleus is much greater compared to mass of electron? Yes, sir. Yes, sir. If so, then isn't it that this term is very small? Yes, sir. तो आप ऐसा अप्रोक्सीमेटली कर ही सकते हैं कि रिड्यूस्ड मास इज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको ध्यान रखना, कहीं कहीं क्वेश्चन में ऐसा कर लिया जाता है थोड़ा इजी बनाने के लिए। थियरी में तो म्यू से चलेंगे हम, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम को थोड़ा ईज आउट करने के लिए ऐसा अप्रोक्सीमेशन लिया जाता है। इट्स अ वैलिड अप्रोक्सीमेशन। As the force experienced by electron is a central force, the potential in which the electron is moving will only depend upon the separation of electron from the stationary nucleus. इस बार
जो पोटेंशियल न्यूक्लियस क्रिएट कर रहा है, ठीक है न्यूक्लियस रेस्ट में माने हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो अपने चारों तरफ पोटेंशियल नहीं बनाएगा, इसका चार्ज पोटेंशियल तो बनाएगा ही। लेकिन जो पोटेंशियल बनाएगा दैट इज सेंट्रल पोटेंशियल। सेंट्रल पोटेंशियल इज central potential or central force are those force or potential which only depends upon the separation between the two particles joining along them. I repeat, central force या central potential उस force या potential को बोलते हैं जिसमें force या potential दोनों पार्टिकल को जोड़े जाने वाले डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। हम थोड़ा सा खाली बिगिनिंग तक ले आ रहे हैं सच दैट नेक्स्ट दिन हम लोग खाली कैलकुलेशन के ऊपर फोकस कर पाएंगे। द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर सच अ सिस्टम विल बी, बिकॉज इट इज थ्री डायमेंशनल तो हमको डेल में ही रहना है। डेल स्क्वायर साई प्लस 2 म्यू, यस रिड्यूस्ड मास 2 म्यू डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस वी फंक्शन ऑफ आर। वी फंक्शन ऑफ आर में याद रखना ये सेंट्रल पोटेंशियल है। जैसे तुम बहुत इजीली याद कर सकते हो कि अगर मान लो इसका चार्ज प्लस ई है, इसका चार्ज माइनस ई है, तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है, तो इस जगह का पोटेंशियल जो होगा दैट इज के ई स्क्वायर बाई आर, सो वी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। एग्री? Yes, sir. Now, as the problem is spherically symmetric, we write del square in spherical polar coordinate and the equation thus becomes del square को spherical polar coordinate में लिख दिए 1 by r square dou by dou r of r square dou by dou r 1 by r square sin theta dou by dou theta of sin theta and so on. This is the equation. अभी तक कुछ नहीं किए हैं. Let us write the function psi, which is function of r theta and phi, as a product of three different functions of r only, theta only and phi only. मैंने वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा रहे हैं कि psi which depends on r theta and phi, psi which is function of r theta and phi can be represented as the product of three functions, while capital R depends on r only, capital theta depends on theta only, and capital phi depends on phi only. The variable separation method. Okay? Yes, sir. अब यहां पर ये जो साई है, एक दो लाइन हमको लग रहा है हम डायरेक्ट कर दिए हैं, लेकिन सोच लेंगे, ओरली सोचना ही पड़ेगा, इतना बड़ा आंसर है, हर स्टेप नहीं होगा। देखो तो ये डो बाई डो आर किस पर ऑपरेट कर रहा है? R. तो इसी को हमने ऐसा लिखा है, ये दोनों आर के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है। Yes, sir. Yes, sir. ये दोनों बाहर आ गया। देखो थीटा, कैपिटल थीटा एंड कैपिटल फाई, अभी थोड़ा देर के लिए ईज आउट करने के लिए कैपिटल थीटा इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, ये बात नहीं लिख रहे हैं, खाली कैपिटल थीटा लिखे हैं। फंक्शनल डिपेंडेंस को अभी छोड़े हैं, बाद में जहां जरूरत होगा ले लेंगे। तो कैपिटल थीटा कैपिटल फाई बाई आर स्क्वायर है अपने जगह, डो बाई डो आर है अपने जगह, ऑफ आर स्क्वायर डेराइवेटिव ऑफ कैपिटल आर। फर्स्ट टर्म इज ओके। Yes, sir. सेकेंड डेराइवेटिव इज विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये दोनों बाहर आ जाएगा। सो यू हैव कैपिटल आर एंड कैपिटल फाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर साइन थीटा डो बाई डो थीटा एंड डो बाई डो थीटा ऑपरेटिंग ऑन कैपिटल थीटा, सेम विद द लास्ट टर्म। एग्री? Yes, sir. अब वेरिएबल सेपरेट करने के लिए क्या कर रहे हैं, पूरा इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर दिए हैं बाय आर थीटा एंड फाई, आर थीटा एंड फाई। तो पूरा को कैपिटल आर कैपिटल थीटा और फाई से डिवाइड कर दिए, तो थीटा और फाई कट गया,
साथ में एक चीज और किए हैं, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई आर थीटा फाइव एंड मल्टीप्लाइंग बाई आर स्क्वायर साइन थीटा। तो आर थीटा फाइव से जब डिवाइड कर दिए तो थीटा और फाइव कट गया, नीचे आर बच गया। ओके, यस सर। और क्या चीज से मल्टीप्लाई किए थे, इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। आर स्क्वायर साइन थीटा से मल्टीप्लाई किए तो आर स्क्वायर कट गया और साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आ गया। यस सर। तो अकॉर्डिंगली बाकी टर्म को चेक कर लेंगे। ऐसा करने से बेसिकली क्या हुआ, ये टर्म सिर्फ किसका फंक्शन बन गया, 5। 5। तो इसको अलग कर लेते हैं। अब यहां पर देखो, फाइव को राइट साइड ले गए, करेक्ट। तो ये पार्ट पहले भी किए हो। LHS इज फंक्शन ऑफ व्हाट, R and theta, and RHS is function of what? 5. 5. So LHS is function of R and theta, and RHS is function of phi. This equation will hold only when, Both are equal to some other constant. Constant. correct, both are equal to some constant. So this equation will hold only when both sides are separately equal to some constant. Both sides are separately equal to some constant, and that constant has been termed as m square, not minus m square. The constant is m square. इसका माइनस यहां डाल दिए है। Is it okay? यस सर। तो एक फाई का इक्वेशन बन गया, बहुत कॉमन सा इक्वेशन था, सॉल्यूशन भी जानते थे तो डायरेक्टली लिख दिए। बीच में प्लस है तो सॉल्यूशन ऑसिलेटरी आएगा। तो a e टू दी पावर प्लस माइनस आई एम फाइव। हम एक बात यहां बताते चले, इस कांस्टेंट को k, इस कांस्टेंट को c कुछ भी ले सकते थे, लेकिन आगे जाके आप पढ़िएगा कि ये हमारा बेसिकली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इसीलिए जानबूझ के इसको कांस्टेंट को m नाम दे दिया गया है। करेक्ट। यस सर। ये वेव फंक्शन पीरियोडिक होने के लिए पाई और 5+2 पाई पर वैल्यू इक्वल होगा। इसको सॉल्व करके नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकाल दिया गया है। ये काम किए हो पहले, इसलिए इसको आप देखते ही समझ जाइए। सो जो हमारा 5 पार्ट इक्वेशन है वो कंप्लीटली सॉल्व होके निकल गया है। ये हमारा 5 पार्ट है। अभी हम लोग का LHS में थीटा और आर अभी भी है, थीटा और आर अभी भी हम लोगों के पास है। तो अब हम लोग थीटा और आर का इक्वेशन सॉल्व करेंगे, यही इंपॉर्टेंट है। थीटा और आर सॉल्व करेंगे, रेडियल पार्ट इक्वेशन निकालेंगे, स्फेरिकल हार्मोनिक्स निकालेंगे जो फर्स्ट टाइम आपको मिलेगा। तो यही इंटरेस्टिंग पार्ट भी है इसका। ठीक है, ठीक है, हम यहीं रुक रहे हैं क्योंकि हम उधर बात नहीं कर पाए थे क्लास को एक्सटेंड करने के लिए। तो हम तुम लोगों का कल क्लास नहीं होगा, ये नोटिस मिला है क्या? यस सर। तो कल क्लास नहीं होगा, और कल हम लोगों का एक्चुअली एक फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम है, फैकल्टी एनरिचमेंट प्रोग्राम है। सुबह को 10 बजे से ही है और 9 साढ़े 9 में हम लोग को जाना होगा। तो कल हम एक ऑनलाइन क्लास लेंगे, लेकिन इवनिंग में, क्योंकि इसको खत्म करना है। कल भी लेंगे और संडे को भी लेंगे, सो दैट ये हाइड्रोजन एटम वाला पार्ट ओवर हो जाए। तो क्लास खुलने के बाद हम लोग एटॉमिक फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट। इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर। शाम में थोड़ा लेट इवनिंग में ही हम क्लास लेंगे, मैंने मान के चलिए नियर अबाउट 8 o'clock, नॉट बिफोर, क्योंकि हमारा 4 बजे तक वहाँ ऑलरेडी प्रोग्राम है कॉलेज में, और उसके बाद मेरा एक तो लायंस क्लब का मीटिंग है, तो वो सब ओवर करते करते हम लोग का उतना टाइम हो जाएगा। सो कंफर्टेबली वी विल टेक द क्लास एट 8 o'clock टुमारो।
8 o'clock in the evening. Okay. And we will carry from here so that we are over with hydrogen atom by taking one more class on Sunday. Okay, fine. I will try to Thank you, sir. share the answer also so that you can give a try to the mathematical steps. Okay, मीटिंग एंड कर रहे हैं. Thank you, sir.